Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this video, we will discuss a very crucial thing, a fear of many candidates, fear of retrenchment. Now, in this video, I will discuss why there is no retrenchment in banking sector, more especially the public sector banks. Why? This is more specific to nationalized banks. And the same model can be remotely extended to State Bank, but there are some factors that is different in State Bank as compared to pack of nationalized banks. The first nationalization took place in 1969 and second nationalization took place in 1980. So post nationalization from 1969, the number of branches were opened in banking industry in unbanked areas, and it led to enormous requirement of staff. So the banks went on recruitment spree from 1971 onwards, and this recruitment continued till 1986. Every year recruitment process was conducted and more staff was taken because expansion of business was going on at very high speed. So there was a requirement of staff due to expansion of business at nook and corner of the country. In 1980, second nationalization happened and those banks also got expanded. So up to 1986, lot of recruitment happened. Then in 1985, computerization was introduced in banking. And the moment computerization was introduced, it was apprehended that computers will replace the staff. Now in banking, retrenchment was not possible. In banking, it was not possible that you expel the employees. So they adopted a unique model. The unique model was that in banking, every month few employees retire. So if you don't employ persons against the retirement, staff will come down automatically. And they adopted this model, and in 1987, very few banks conducted the recruitment. And from 1988 onwards, they reduced the recruitment to bare minimum. So the banking industry observed very less recruitment from 1988 onwards. 1988, 1989, 90, 91, 92 and so on. And then came the year of 1999. By this year, now some banks found that they are still carrying excess staff. And a VRS was offered across the banking industry. And many people opted for it, and many people gone out of banking in around maybe 2000 or so. I think that was the year 2099 or 2000. That is what I am trying to recollect. So again, adjustment of staff happened. And then the people, those joined the banking industry. Post 1970 onwards, they started retiring after putting 38 years of service, 37 years of service from 2008, 2009 onwards. So again, heavy recruitment started from 2010 onwards. So we found another spell of reasonably good recruitment as people were retiring, replacement was happening, but banking industry adopted a unique model of reducing the staff year after year. They have not retrenched the staff, but they have not taken the full replacement. Say 100 people are retiring, they took only 60. So if
Automatically 40 people reduced. So from 2010 onwards, the banking industry adopted that they will take the staff but at a reduced level as compared to retirement. So gradually the number of vacancies started coming down, and post 2014 the number of vacancies started coming down further because the number of people those who are retiring also reduced year after year. Now, the moment all the people those joined before 1986 retire, naturally banking industry will be adequately staffed. Unless some retirement happens, unless some, you can say, business growth happens, you don't require the staff. But something new has happened in last 3-4 years. What has happened is, post 2019, the most of the recruitment processes by SSC, by railways got delayed. So the people those were looking for job on those areas, they started coming to banking. So some of the positions were occupied by these people, and the moment they got the another job, now they are leaving the job. So again creating vacancies in banking. So the continuation of vacancies is going on, although at a reduced level. So if somebody is having fear of retrenchment in banking industry, it is unfounded. Because banking industry staff is automatically getting reduced on account of retirement and on account of people going for alternate jobs. And then whatever is the net shell position, bank is taking some new employees for replacement of those vacancies, and that's why recruitment in banking industry is now still continuing despite all odds, where all the processes are delayed, maybe SSC, maybe railways. So don't have unfounded fear of retrenchment in banking industry. Some of you have asked me, sir, if this happens, whether our job is secure, if that happens, our job is secure. Because in banking, automatically staff is getting reduced. So they need the people, those are working in bank. So there is no fear of retrenchment. This is what I want to say. I think message is loud and clear. Recruitments will continue. No retrenchment will happen, because automatically due to retirement and resignation by certain people, the equilibrium is being set in. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर बैंकिंग में रिट्रेंचमेंट तो नहीं हो जाएगी, या बैंकिंग में रिट्रेंचमेंट क्यों नहीं होती है? तो इसको हम हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री, खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक में नेशनलाइज पैक है, उसकी स्टार्ट हुई 1969 से, जब पहला नेशनलाइजेशन हुआ। जब बैंक नेशनलाइज हुए तो ये बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे। सडनली इन्होंने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने से स्टाफ की रिक्वायरमेंट हुई, और 1969 से 1986 तक लगातार स्टेप अप रिक्रूटमेंट होती चली गई, और बैंकों का स्टाफ बढ़ता गया, बैंकों की ब्रांचेस बढ़ती गई, बैंकों का बिजनेस बढ़ता गया, और लगातार स्टाफ रिक्रूट होता चला गया, और फास्ट प्रमोशंस भी, नॉट वेरी फास्ट बट एज कंपेयर टू प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, प्रमोशन फास्ट हो गई। अब इसके बाद फेज आया कि 1985 के अंदर कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हो गया। जब कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों के दिमाग में ये डर आया कि अब कंप्यूटर आ गए तो ये स्टाफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसका क्या करें। तो उसमें एक वाया मीडिया निकाला गया कि स्टाफ को ना निकालना पड़े, तो हम ऐसा करते हैं कि आने वाले टाइम में स्टाफ की रिक्रूटमेंट को स्लो कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और लोग हर साल रिटायर होते जाएंगे और ऑटोमेटिकली
इक्विलिब्रियम सेट इन हो जाएगा। और 1986 के बाद सभी बैंकों में रिक्रूटमेंट या तो कम हो गई या बंद हो गई। 1987 में बहुत कम बैंकों ने रिक्रूटमेंट की। 1988 ऑनवर्ड्स बहुत स्कैंटी रिक्रूटमेंट हुई है। 88, 89, 90, 91 इसमें बहुत छोटे छोटे बैचेस में रिक्रूटमेंट हुई और लोग रिटायर होते गए, स्टाफ कम होता गया। पर 1999 में आके ये देखा गया कि अभी भी स्टाफ जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से कंप्यूटराइजेशन हो गया और स्टाफ को रिप्लेस करता चला गया कंप्यूटर। तो 1999 में वीआरएस ऑफर कर दी गई। 2000 के आसपास मेरा ख्याल ये मैच्योर हुई है, 2001 में, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे आ रहा, बट ये इसी वर्षों के दौरान हुई। और वहाँ से रीसेट हो गया स्टाफ कम हो गया और लोग रिटायर होते गए, छोटी मोटी रिक्रूटमेंट होती गई। फिर 2010 के पास आके जो लोग 1970, 1972, 1973 में मैसिव लगे थे, उनकी 38, 39, 40 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट आनी शुरू हो गई। तो फिर मैसिव रिक्वायरमेंट बैंकिंग की आ गई। अब क्योंकि ये रिटायरमेंट की रिप्लेसमेंट थी, तो बैंकों ने इसमें एक यूनिक मेथड निकाला कि हम स्टाफ घटाते भी जाएं और स्टाफ लेते भी रहें। तो अगर 100 लोग रिटायर हो रहे थे, उसकी जगह उन्होंने 60 लोग रिप्लेसमेंट में लिए। तो उससे क्या हुआ, 40 लोग एग्रीगेट में कम हो गए, मगर रिक्रूटमेंट नहीं रुकी। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक ये चलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे रिटायरमेंट कम होती गई, वैसे वैसे रिक्रूटमेंट कम होती गई और आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिक्रूटमेंट कम होती गई। मगर 2019 के बाद एक नई चीज़ सेट इन हो गई कि जो अल्टरनेट जॉब प्रोवाइडर थे, जैसे कि रेलवे था, एसएससी था, उनके प्रोसेस डिले होने शुरू हो गए। जब उनके प्रोसेस डिले होने शुरू हो गए तो उनमें से कई कैंडिडेट जो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो भी बैंकिंग में अगर क्लियर हो गए तो ज्वाइन करने लग गए। अब जैसे जैसे उनका वहाँ पर सिलेक्शन होने लगा, वो छोड़ के जाने लग गए बैंकिंग को। तो एक तरफ वैकेंसीज क्रिएट होने लगी रिटायरमेंट से, एक तरफ वैकेंसीज क्रिएट होने लगी रेजिग्नेशन से। तो ऑल्दो बैंकिंग के अंदर स्टाफ तो घटता ही जा रहा है, पर रिट्रेंचमेंट की नौबत नहीं आई, क्योंकि अपने आप ही स्टाफ कम हो रहा है, अपने आप ही इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। तो जो बैंक को अपनी स्टाफ को रिड्यूस करना था एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली अचीव हो रहा है। पर नया स्टाफ इसलिए चाहिए कि मान लीजिए 100 लोग जा रहे हैं, पर मुझे घटाना 40 था, तो 60 मुझे फ्रेश हैंड चाहिए, तो 60 लोगों की हम रिक्रूटमेंट कर देते हैं। और अब क्योंकि मैंने आज 2-3 दिन से वीडियो में आपको बताया कि अच्छी प्रोफेबिलिटी आ गई है, तो अब दोबारा एक्सपेंशन मोड में बैंक्स चले जाएंगे। तो ये जो रिप्लेसमेंट वैकेंसीज हैं प्लस एक्सपेंशन की जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी। और जो ये फियर है रिट्रेंचमेंट का, ये अनफाउंडेड है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या होगा, कहीं ये तो नहीं कि बैंक में से हमको निकाल दिया जाएगा, कल को क्या होगा। बैंक में रिट्रेंचमेंट की मतलब ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्टाफ रिड्यूस हो रहा है। तो क्यों निकालेंगे जब आपके पास आपको स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसीलिए ना तो बैंकिंग में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है रिट्रेंचमेंट का, और ना ही आगे नज़र आ रहा है, क्योंकि हर साल ऑटोमेटिक रिटायरमेंट होते चले जानी है और स्टाफ कम होते चले जाने। कई लोग बैंक छोड़ के अपने आप जाते रहेंगे जब जब उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम बैंकिंग इंडस्ट्री में आता रहता है। इसलिए ये जो आपके दिमाग में फियर है, कुछ लोगों के दिमाग में फियर है कि ये हमारी जॉब तो सिक्योर है कि नहीं है, जॉब सिक्योर है बैंकिंग में। गॉड ब्लेस यू। और